हे ऑलराइट गाइस, आज के स्ट्रीम में ये करते हैं EVGA का RTX 2060। ये मैंने लिया है अमेज़न से एंड अमेज़न US से मंगवाया था और शिप करके इसका टोटल प्राइस रफली 25,000 रुपीज़ हुआ। तो आज के स्ट्रीम पे यही करते हैं कि इसको मैं अनबॉक्स करूँगा और फिर उसे इंस्टॉल करूँगा अपने एक पीसी में। और अगर बीच में कोई भी क्वेश्चंस है या कोई डाउट है तो चैट में टाइप कर लेना एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। और ये हिंदी में आप करूँ या मैं इंग्लिश में करूँ, मुझे बताओ। वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल, क्योंकि मेरे लिए आई एम फाइन विद बोथ। तो जो भी जमेगा मुझे बताओ, मैं वैसे ही कर लूँगा। और फेस रिवील नहीं होगा अभी तक सिड। आई एम वेटिंग फॉर 10 मिलियन सब्स फॉर दैट। 10 मिलियन के बाद फेस रिवील। रिचनेस नहीं, मैंने अपना 1070 बेचा था और टीवी बेच दिया और मॉनिटर बेच दिया और फिर मैंने ये कार्ड खरीदा है। तो रिचनेस नहीं है, सब पुराना सामान या जो सामान मैं निकाल सकता था मैंने वो निकाला है। और मैंने ये इसीलिए लिया था क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं केस दिखाऊंगा जिसमें ये फिट कर रहा हूँ। और वो केस बहुत छोटा है। तो मेरे पास इसके पहले जोटैक का 1070 मिनी था और वो फिट करने के लिए मुझे उसका पीएस ही ओपन करना पड़ रहा था। अब वो जब मैं केस दिखाऊंगा तब पता चलेगा कि उसमें क्या दिक्कतें आई थी या क्या प्रॉब्लम हुआ था और ये क्यों लिया हूँ मैंने। क्या, तो इसको अनबॉक्स करते हैं। फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग ऑन स्ट्रीम लाइव। एक्सी सॉरी, और मेरे पास चप्पल नहीं है तुम्हारे जैसे, पजामा है लेकिन। कि वैसे नॉर्मली अगर काम कर रहे हो सीपीयू के साथ में या कुछ भी कंप्यूटर रिलेटेड काम, तो उसे कोई एंटी स्टैटिक प्लेस पे रखना। तो नॉर्मली मैं या तो कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर रख लेता हूँ, तो जैसे ये मेरा बॉक्स था मैं इसी के ऊपर काम करूँगा, या फिर ये एंटी स्टैटिक बैग है मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। तो ये कार्ड है और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। एग्जी की चप्पल ओपी, यस। ये लेडीज पर्स लग रहा है। हाँ, ये है, बहुत छोटा है। ये बहुत छोटा ग्राफिक्स कार्ड है और ये मेरा मोबाइल का केस है इसके सामने, ये देखो। तो ये OnePlus 6 है और ये ग्राफिक्स कार्ड है। तो इट्स लाइक जस्ट 1 इंच और अ कपल ऑफ इंचेस बिगर देन द मोबाइल फोन। तो ये ITX फॉर्म में है। ITX इज लाइक द स्मॉलेस्ट फॉर्म कंज्यूमर में अब जो मिल सकता है। ओके, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं था। नॉर्मली कोई कोई ग्राफिक्स कार्ड्स के साथ DVI या VGA केबल्स आती है, HDMI या DVI केबल्स आती है। तो इसमें कुछ नहीं था। ब्लैक प्लेट भी है और ये है। ओके, इसका साइज तो मैंने दिखा दिया, ये बहुत ही छोटा था। अब मैं दिखाता हूँ ये जो केस में जाने वाला है। ये केस है। Check this. मुझे स्क्रू ड्राइवर, दो स्क्रू ड्राइवर लाए थे। ये
ये इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा अत्याचार हो चुका है। मैंने पुराना ग्राफिक्स कार्ड निकाला था। ये PSU है। और मैं वही बता रहा था कि ये देखो, ये PSU मुझे ओपन करना पड़ा था। ये उसका टॉप पैनल यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जब मैं ग्राफिक्स कार्ड, जो मेरा 1070 था, जब मैं वो फिट कर रहा था तो वो इतना बड़ा था। तो उसको फिट करने के लिए मुझे ये कवर निकालना पड़ा, और मेरा ग्राफिक्स कार्ड इन दो, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, भी कोई इंजीनियर होगा तो वो बता पाएगा शायद। ये या तो रेजिस्टर्स है या तो कैपेसिटर्स है। इन कैपेसिटर्स को टच कर रहा था, एंड आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद दैट। क्योंकि अगर ये हीट हो गया या यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया तो आई वाज अफ्रेड दैट इट माइट अफेक्ट द ग्राफिक्स कार्ड एज वेल। एंड ये बहुत छोटा एंड कॉम्पैक्ट केस है, अगर तुम देखोगे तो। मैं मदरबोर्ड दिखा देता हूँ। आई डोंट नो ये नज़र आ रहा है कि नहीं, मैं इसको कैमरा के पास में लेकर आता हूँ थोड़ा। PSU इतना छोटा है, यस PSU छोटा है, लेकिन ये 450 वॉट्स का PSU है। और इसके दो पार्ट्स है। ये PSU है, नहीं, ये AC/DC है, और PSU यहाँ पर है। तो मैं कैमरा के पास एक मिनट लेकर आता हूँ, एंड लेट मी चेक इफ इट कैन कैप्चर प्रॉपरली। नहीं, ये ओवरहीट नहीं होता है। इसके टेम्परेचर्स मैंने ट्रैक किए हैं, एंड इट डज नॉट हीट। अराउंड 80-85 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर्स रहते हैं इसके, यानी व्हेन आई एम रनिंग एट मैक्स। तो ये देखो, ये AC/DC है, और यहाँ पे PSU है। ये PSU है, एच बोलते हैं इसको। और ये मिनी ITX है। दिस इज रफली आई थिंक अराउंड 9 इंच बाय 9 इंच। हाँ, मेरा इससे बड़ा है। ओके, तो दिस इज 9 इंच बाय 9 इंच स्क्वायर है ये, रफली। ओके, तो अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका कवर लगा देते हैं, सो दैट आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस एनीमोर। एंड अगर कोई क्वेश्चंस है इन द मीनवाइल तो मुझे बताओ, टाइप करो चैट में, एंड आई विल ट्राई टू आंसर। कैपेसिटर्स, यस, थैंक यू मॉम। इतना मॉम। कोई क्वेश्चंस फिलहाल, टिल नाउ, anything that you want to know, either about the build or about the case or the GPU or anything in general about assembling a PC. यहाँ पे किसी और ने कभी बिल्ड किया है PC? कभी असेंबल किया है खुद का PC, या कुछ पार्ट्स चेंज किया है रैम के अलावा? रैम इज probably the easiest, one of the easiest things to do. थिंक मैंने इनके कर दिया। लेजी ने किया है, ओके। जिन्स में भी लैपटॉप वाला थोड़ा टाइम। लेजी क्या क्या चेंज किया? मदरबोर्ड चेंज किया, नाइस। Was it a simple task, या फिर you had done it before, or you watched some YouTube channels and then you did it? Was it challenging? How was your experience? Motherboard and everything.
लैपटॉप में भी मैंने वैसे हीट सिंक चेंज किया हुआ है। मैंने लैपटॉप का हीट सिंक चेंज किया है। मेरे भाई का लैपटॉप था जो ओवर हीट हो रहा था। एचपी का लैपटॉप था, तो उसने बॉम्बे में कहीं रिपेयर करने के लिए दिया था, और वो बंदे ने रिपेयर करके दिया तो फिर भी ओवर हीट हो रहा था। तो उसने मुझे पूछा क्या है यार, क्या सीन है, चल नहीं रहा है मेरा लैपटॉप। मैं बोला ठीक है, मैं आता हूँ तभी मैं चेक करूँगा। तो मैं जब गया और मैंने उसका लैपटॉप खोला, तो मैंने देखा उसका जो सीपीयू का फैन था, वो ऐसे रिम्स रहते हैं, रिम्स या सपोर्ट स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उसके अंदर रहता है, क्योंकि लैपटॉप का फैन बहुत ही छोटा रहता है। तो वो फ्रेम टूट गई थी, और जो बंदा रिपेयर कर रहा था उसने वो फ्रेम को सेलो टेप से चिपका दिया था। तो बोला यार, ऐसा अगर थूक लगा के चिपकाने का काम कोई प्रोफेशनली कर सकता है, तो यार साला अपन भी खोल के कर ही सकते हैं यार क्लोज। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ये बाद में लगा था। ये मेरे पास है राइजर कार्ड, क्योंकि कार्ड इस तरह से लगने वाला है इसके अंदर, so it will be facing the other way, and would we fix it, we'll have to fix it, riser cut fix कर, फिर इसको फिक्स। अगर तुम लोग को देखना है ये केस में मैंने क्या क्या किया है, तो ये देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर मुझे ये फिट करना था, क्योंकि इसके साथ में जो प्लग आता है वो बहुत ही छोटा था, वो नॉर्मल जो लैपटॉप का रहता है वैसा रहता है, तो वो इन होल्स के अंदर फिट होता था। तो मैंने वायर कटर लिया है और इसको कट किया है पूरा, और ये बेंड किया, मैंने खुद से बेंड किया ये। तो मुझे अभी ठीक करना है, क्योंकि ये फिट नहीं हो रहा है मेरा फिलहाल। तो आई हैव टू मेक सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रैकेट which goes behind this and gives this support. तो वो भी एक दूसरा टास्क है। okay. पैनल्स खोल देते हैं, सीपीयू लगाते हैं। हाँ यार, क्या करे, वो करना पड़ता है। ये केस ढूंढने के लिए मैंने इतना मगजमारी किया ना, सच्ची। I bought it from someone in Singapore who was selling it for like really cheap. Case and PSU दोनों। So I bought it off him, got it shipped to Kuwait. पहले connect। फ्रेम खोलनी पड़ेगी। बाय द वे, स्ट्रीम क्वालिटी कैसी है? मैं क्योंकि मोबाइल से स्ट्रीम कर रहा हूँ। मोबाइल को मैंने OBS से कनेक्ट किया है। आई डोंट नो व्हाट द स्ट्रीम क्वालिटी लुक्स लाइक।
going through Wi-Fi and then going to OBS. Bit worried about the quality. Face only at 10 million subs. जल्दी हो जाएगा, कोई कहीं नहीं. This has access. It again. फिक्स कर, इसको पहले पूरी तरह से फिक्स कर देते फिर. Alright, फिक्स क्या है, थोड़ा फोकस लगाना पड़ेगा. आइडियली मैं ये पूरा केस खोल के काम करना चाहता हूँ, बट इतना टाइम फिर से स्पेंड नहीं करना पूरा वापस से ओपन करने सब ड्रामा. फिटिंग, बट यहाँ पे थोड़ी गैप है अभी भी. देखते हैं फिट होता है. श्योर इफ आई वाज बिग. बीच में थोड़े लैग आते हैं लेकिन चलेगा. ओके, थैंक यू. I'm a bit worried. See, it's not closing in completely. There is a gap. ये flush fit नहीं हो रहा. Even see if there is anything that's blocking it. क्योंकि हाँ, थोड़ी ज़बरदस्ती करनी. हिंदी फिल्म के हीरो. Get this in. Sap. By the way, मैं कारपेट पे काम कर रहा हूँ चादर लगा के. अगर ये कोई और कर रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये टेबल पे या फिर एंटी स्टैटिक पे करे प्लीज. Do as I say, not as I am doing. Clearly. राइट करते हैं.
does, and there is some space as well. Happy. Sorry. फिक्स करने के पहले एक्चुअली should fix the power pin. मेरे पास उसके लिए अडेप्टर है, ये 180 डिग्रीज अडेप्टर है. ये लगाऊंगा मैं क्योंकि मुझे यहाँ से वायर नहीं खींचनी है, बिकॉज इफ आई पुल अ वायर लाइक दिस, तो जब मेरा PSU यहाँ पे लगेगा, it will not, I will not be able to bend that cable क्योंकि ये बहुत बाहर निकलने वाला. So I've got what is a 180 degree adapter. Another one. By the way, if you guys are looking to fit a 180 degree adapter like this, ओरिएंटेशन चेक कर लेना कि क्या है ओरिएंटेशन, क्योंकि ये देखो मेरे पास ये दो ओरिएंटेशन के हैं. आई डोंट नो अगर ये कैमरा में क्लियर होता है. एक सेकंड, लेट मी चेक. ये दो ओरिएंटेशन के, one of these are pointing downwards and one of them is pointing upwards. एक मिनट में कैमरा के पास में लेकर आता हूँ. तो इसमें ये ओरिएंटेशन अगर देखो तो ये देखो, ये बेंड यहाँ पर है, इसमें बेंड ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है. तो डिपेंडिंग ऑन योर ग्राफिक्स कार्ड, यू विल हैव टू बाय वन विद अ डिफरेंट ओरिएंटेशन, क्योंकि सब ग्राफिक्स कार्ड की ओरिएंटेशन अलग है. इसके पहले मेरे पास जो जोटेक था उसका अलग था, इसका अलग है. तो हर मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से they have a different specification. So based on that, you'll have to see what you want and get that according. I think we are good to. Can fit it in, but I need to put some force on it. ये टच कर रहा है, which is fine because इसके पीछे एक protective tape है. It is heat resistant and current resistant. See any issue. Want to do and cable like so I can tidy up my. And I need to fix one more cable. Okay. Camera quality is OP. Thank you so much. Okay.
tricky to cable. Need to get this in there. That way cable के लिए बहुत ज़्यादा is that. The reason I didn't go for the 2-pin or laptop pin was because it's only 2 poles. It's not a grounded cable or a grounded connection. तो ये 3-pin is a grounded connection. यहाँ पे 3 cables है. उसमें कर सकते हैं उसे ग्राउंड जो 2 wires वाले हैं, लेकिन उसमें it's like out of my league. I would not mess around with wires to that extent. I would not be comfortable doing that at all. Someone else is, you could probably look at that as well, and that's also another neater option to explore than what this is. यहाँ पे अब मैं complete भी जब कर दूंगा, I will still have some sort of a mess at least on this side of the case, on the GPU side of the case. The other side will be fine. It's going to still be messy. And try it. Is, this is just like Lego bricks. It's just that a bit more expensive. You have the possibility of electrocuting yourself as well. But other than that, it's pretty fine. It's just like Lego. Right. मुझे भी एक दे दो यश. $500 भेज, मैं भेजता हूँ तेरे लिए. Only 500 just for you. तू दोस्त है इसके लिए. Not cooperating. It's going to be challenging because of that 180-degree adapter. इसके फोरम पे मैंने चेक किया था. What people have done is shaved part of the metal on top of that cover. तो वो जो कवर है उसके ऊपर का पार्ट उन लोग ने एक फाइल से घिस दिया और फिर फिट किया है ये कनेक्टर को. एक और ऑप्शन है जिसमें ये जो वायर्स है इसके बीच में ये जो पार्ट है, दिस इज नॉट डूइंग एनीथिंग. So these are the only pins that go inside. So what they do is ये पूरा पार्ट निकाल देते हैं और सिर्फ ये पिंस के अंदर का जो मेटल है वो रहता है. तो मैन्युअली एक एक पिन को कनेक्टर के अंदर फिट कर लेता है जीपीयू के. एंड दैट्स हाउ दे फिट इट. पार्शियल फेस रिवील हुआ क्या? पार्शियल फेस रिवील नॉट येट. आई डोंट नो. This whole case, by the way, is like smaller than, or actually as big as a PS4, but definitely a lot better than a PS4 in terms of specs and performance. And it's a lot costlier as well.
ओह, ब्लैक चश्मा दिख गया. Okay, I'll have to send people to kill all of you. It's it's pricier than a PS4, but it's very compact. And I would rather have this on the console or near my television rather than having a PlayStation. And that's just my preference. Okay, to get the PS4 pleb, yes. अरे क्लाउन, तुझे पता है अब iPad Pro पे you will get 120 FPS. That is 60 FPS more than what you get on a PS4 or Xbox. And वो भी अगर native res पे run किए प्लीज iPad के, so it's around 2K. 2K res at 120 FPS. I don't know when a console will get that. And by the way, जब consoles आएंगे, I mean जो next year अब जो बोल रहे हैं slated है जो PS5 और Xbox X का, it's going to be a lot pricier. I mean you might as well, actually I think they will make a case where it might be better to get a PC rather than getting a console. It's not that difficult to actually upgrade a PC, right, compared to a console. The only thing you can upgrade in a console would probably be the hard disk, that's it. You can't upgrade anything else. And वो भी हर कोई करेगा नहीं यार. And it's not that simple. नहीं, PS4 बेचना मत देख गुलाटी. उसमें YouTube पे ना बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए जहाँ पे उन लोग ने प्ले स्टेशन के केस के अंदर पीसी बनाया है या पीसी फिट किया है. तो वो कर, बेच मत तेरा पीसी प्ले स्टेशन 4. नहीं उसका कुछ तो काम आएगा ना. I mean reusing it as a case would be a lot more than using it as what you're using it right now. I mean a lot more worthwhile and a lot more value than that. Cable management में ना बहुत फालतू है. I've tried to fit all of these wires as neatly as I can. मैं इनिशियली सोच रहा था ये यहाँ पे फिट करना है, ये इसके अंदर से जाएगा एक्चुअली, ताकि उसमें SSDs फिट हो जाएंगे. एंड आई थिंक एक्चुअली वही करता है. लेट्स फिट दिस ताकि मुझे SSD की जगह मिल जाए. आई वुड लाइक टू फिट एन SSD क्योंकि मेरे पास अभी जो ये NVMe है ये सिर्फ 500 GB का है. तो अभी के जो गेम्स हैं मैं शायद 2 या 3 गेम्स डाल दूंगा तो उसी में ही मेरा 500 GB खत्म हो जाएगा. कुछ मतलब नहीं है देख के. PS4 पे ये सब नहीं होता. इतना तुझे क्या मालूम, PS4 पे 60 FPS के ऊपर भी नहीं होता ना. क्या करें, 60 FPS की ज़िंदगी अलग ही है. सबको बड़े पसंद है केसेस. अच्छा जिन्स, मुझे तो लगा सबको कुछ और बड़े पसंद है. कुल्फी.
सबको बड़ी कुल्फी पसंद है, गलत मत समझना। बेटा तो लेके जाना। ये पहले टेस्ट फिट करके देखना चाहिए, जो मैं कभी नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ टेस्ट फिटिंग। और बोलते हैं ना, मेजर वंस, नहीं मेजर ट्वाइस कट वंस, मेरा उल्टा है, मेजर नेवर एंड कट एवरी टाइम होता है मेरा। बट एटलीस्ट आई होप ये सब देख के यू गाइस कैन लर्न हाउ टू प्लान फॉरवर्ड all the things that you should be. Don't be afraid to apply some force if needed. Cables बहुत resilient होते हैं. Don't go overboard either, but don't be afraid. With this first. Okay. बस स्क्रूज इतने हो गए ना, मुझे पता नहीं अब कौन से स्क्रू कहाँ फिट होते हैं. इतनी सारी चीज़ ओपन किया है. नहीं कोई बात नहीं, होता है. ये मेरे काम ना ऐसे ही होता है, सही में मेरे सब काम ऐसे ही होता है. आई डोंट प्लान अहेड. बट एवरीवन एंजॉयज दिस, क्या करें, सब impatient थोड़ा सा. That's how I do things sometimes. Yeah, no problem. It won't take time. सर सिर्फ दो ही स्क्रूज फिक्स करूँगा, चारों स्क्रूज फिक्स करने की ज़रूरत नहीं. Not adding any structural integrity. So, तुम लोग ने अपना पीसी कब बनाया? Like at what age? When did you open up a PC or like that? OnePlus 6 है कैमरा, OnePlus 6.
It's not fit in with this. Anything. The clip. ये सब ऐसी चीजें करनी पड़ती पोर्टेबल. This clip is now hitting against this frame. तो दूसरे साइड पे कवर नहीं लगेगा उसकी वजह से. I'm planning to break this cover, break this clip. चेक इसका एक से. अभी फोर्टनाइट खेलने के लिए फोन कर रहे हो क्या यार. अभी थोड़ी खेलूं. मैंने मिसप्लेस कर दिया एक पार्ट. Can't find it. I keep. Yep. Perfect. Happy with it. Fits nicely. Okay. Yes. करना. SSD यहाँ पर आएगी. Cable manage some later. Nice. I think I'm happy with the fit now. This is what it was before. Sweet.
I mean, if you're building a normal PC, right, with a normal case, ये सब struggle नहीं होगा तुम्हारा, जो मेरा हो रहा है फिलहाल. It's going to be a lot more easier. I just wanted to show the challenges of such a small PC case, and also how easy it is actually to change any part of your PC. It is relatively simple, right? It's not that difficult. Okay. William. To get screws that fit flush with this though. I don't have them putting or not exactly fitting flush. थोड़े बाहर निकल. बड़ी चीज अच्छी लगती है चलाना. बड़ी कुल्फी सबको अच्छी लगती है. मेरा इनिशियल प्लान था इसका जो केस है, जो ये सिल्वर वाला का पार्ट है, I wanted to paint that white, matte white, and for some reason I thought like नहीं, फिलहाल PC असेंबल कर लेता है, पेंट करने का काम बाद में देखिए. है तो वैसे बेयर मेटल, तो इसको पेंट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. एनोडाइज्ड है तो सिर्फ सेल्फ एचिंग प्राइमर लेना पड़ेगा और उसके ऊपर वाइट पेंट मारना पड़ेगा. What do you guys think? Should I get it painted or should I just leave it as it is? Now this cable is going to be like so tricky and so challenging. I'm just not happy with this wire for some the way it is. Like from the start, it's been one of the most troubling parts of this whole build. I just don't know what to do with it, how to get rid of it. It has been my nemesis from day one. वायर के पीछे ही मैंने इतना सारा खर्चा कर लिया, getting those wire cutters, getting a metal file. I know I could just cut them off and solder them, but मैंने ये पहले कभी किया नहीं, soldering और wires का cutting. I don't feel comfortable. I would rather not die getting electrocuted trying to build a PC. So I just left that on the side and never given it too much thought. Left it on the side. But if you guys are interested in this case, it's called the Skyreach S4 Mini. Find for it. Handmade by a guy from
तो पहला इटरेशन बहुत ही ज़बरदस्त। ये केबल मैनेज करना बस। Yes, I take it out on. ये केबल लफड़ा कर रहा है। हाँ, ये केबल स्टार्टिंग से ही लफड़ा, इसी के पीछे बहुत सारा टाइम स्पेंड केबल को के पीछे। पर मैं भी ढीठ हूँ, मुझे ये 3 पिन चाहिए था, तो इसके लिए मैंने इस केबल किया है। Decisions were made. ये तो कैसे ही फिट हो जाए। SSD का मुझे कोई टेंशन, आराम से फिट हो जाए। SSD ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मूविंग पार्ट्स भी। Stuck with some double-sided tape and I don't know. This should be how it will look like. I'll have a bracket over here that will come in. Acrylic का कट करके ऐसे एक हाफ स्क्वायर, 3/4 ऑफ अ स्क्वायर फिट आएगा यहाँ, ऐसे इस साइड में। Will fit in here. I think it looks good. The case is going to close correctly. There are some pushing against. So once I get the case closed, it should. फिट कर देंगे। ये PSU को भी फिट करने के लिए यहाँ पर स्क्रूज रहता है। मैंने उसका ओरिएंटेशन अलग रखा है, इसीलिए वो फिट नहीं हो रहा है। I think I can put something over here. Find something. ब्लॉक है मेरे पास। ये ब्लॉक का इस कूलर के साथ आया था पैकेजिंग में। Fit that here. PSU.
सबको screw in नहीं करोगे? I will screw it in. I'm just checking if everything fits in now. I will screw. I just want to check if nothing's moving. This PSU keeps falling down, right? Because I have not screwed that. Yeah, the case looks nice. I mean, the first thing I did like about the case was the way it looks. I mean, it really looks very beautiful. It's very beautiful. No denying. It's something that you can just keep it in front of your television and it just looks nice. इसका एक small form factor forum है. You check stuff there, you will see how people have actually done their builds. And some of them are just absolutely beautiful. People have painted it electric blue and done like wooden panels over here in the front. Some have like made a cutout over here with acrylic and fit in RGB lighting or a display, and it looks just fantastic. Seriously, बहुत बहुत प्यारा दिखता है. Really like those. It's I'm missing one 5 screws. I don't know. SSD को screw नहीं करूँगा मैं. हाँ ये this block is made out of foam. It came as part of the packaging for this. I just kept it because I thought it might be useful somewhere. And fortunately it has been. And cheat a little bit. Eight I meant put in 3 screws. यहाँ पे फैन है. लिंक दे देना. किसका लिंक? 2 पिन होता तो डायरेक्ट कनेक्ट होता. हाँ. इस साल तक मैं क्या बोले. क्या चल क्या भेजा है अकाउंट. आधा. Less to worry, more people to give support. मेरा खाली एक क्वेश्चन है. लाइक मेरी ये वायर है and this is a 4 pin and there is nothing on my PSU to fit any of that.
There is no place anywhere. I just don't know where it's going, and I don't know how I will power my. Oh, I actually there is a pin there. My bad. I need हो गया. इतने दिनों से मैं इसे देख रहा था और मैंने का लिंक देता हूँ, केस का भी लिंक देता हूँ और ये पीएसयू का भी लिंक देता हूँ. Because you can make it without this PSU. You can have an external PSU, and it's going to be a much easier build. I am तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स का इसमें ज़्यादा टेंशन के ये पूरा ओपन पैनल है, वेंटिलेटेड है. ये जो हीट सिंक इसके साथ में एक्चुअली छोटा सा फैन आया था, 90 का फैन था, तो वो सिर्फ इतना सा था. मैंने उसे रिप्लेस करके 120 का फैन लगाया, तो ये मदरबोर्ड के बहुत ज़्यादा पार्ट को कवर करता है. तो जो पहला फैन था वो बहुत ही छोटा था और वो सिर्फ सीपीयू का जो हीट सिंक है उसके ऊपर आ रहा था. ये अब थोड़े से वीआरएम्स के ऊपर भी आता है, तो इस फैन की वजह से अराउंड 5 डिग्री का डिफरेंस हो गया, 5 से 10 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है स्ट्रेस टेस्ट में, एंड दैट्स क्वाइट अ बिग थिंग. तो इट्स लाइक द टेम्प्स हैव ड्रॉप डाउन फ्रॉम यूज्ड टू बी 85 सीपीयू, अब 75-80 आता है अगर मैं स्ट्रेस टेस्ट रन करूँ तो विच इज़ प्रीटी फाइन. गेमिंग के टाइम पे ओके, नथिंग टू सीरियस. गेमिंग के टाइम पे एक चीज़ होती है कि ये पार्ट और पीछे का पार्ट, यहाँ पर जो भी पार्ट आएगा वो दोनों चीज़ें बहुत गर्म हो जाती है. लाइक दे आर नॉट हॉट हॉट, दे आर वार्म. यू कैन होल्ड इट बट नॉट फॉर टू लॉन्ग. So that's the only thing, but fine other than that. And the best way to keep it would be like this, vertically. Let's you keep it vertically ताकि दोनों साइड पे, यहाँ पे मदरबोर्ड के लिए और यहाँ पे जीपीयू के लिए कूलिंग आ जाएगा, दोनों के लिए कूलिंग आ जाएगा. कोई कोई लोगों ने क्या किया है कि जीपीयू को फ्लिप कर दिया है. तो यू कैन सी लाइक मेरा जीपीयू इज फेसिंग द ऑपोजिट साइड ऑफ द सीपीयू, तो दे गॉट अ लॉन्गर राइजर लाइक दिस वन. दिस इज अ मच लॉन्गर राइजर केबल. तो उसको डाल के उन लोग ने फ्लिप किया है, टर्न कर दिया है इस तरह से ताकि जीपीयू को टर्न कर दें. और फिर ये पीछे का जो पैनल है उसको या तो कोई कोई लोग ने निकाल दिया है या फिर कस्टम प्रिंट करा के उल्टा प्रिंट करा है उसे, ताकि व्हेन दिस कार्ड इज फ्लिप्ड दे विल हैव अ प्लेट विच इज स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि ये कनेक्शन सब यहाँ पर चले जाएंगे. सो दे कस्टम प्रिंटेड दैट एंड दे फिट दैट एज वेल. इसके पहले मेरा जो कार्ड था 1070 वो यहाँ तक आता था जब मैं इंस्टॉल कर रहा था उसे. तो एक्चुअली वो कार्ड क्योंकि इससे ज़्यादा मोटा था तो वो यहाँ पे फिट हो जाता था, लेकिन मेरे पीएसयू के साथ में फिट हो रहा था एंड आई कुड नॉट फिट द पीएसयू एंड द कार्ड टुगेदर. तो मैंने वो कार्ड लेके उसको यहाँ पे कट किया था पैनल्स so that I can shift the rest of the card behind, and then I screwed it back again, and I had slightly misaligned ports. तो मेरा HDMI पोर्ट एक ब्लॉक हो गया था, एक DVI पोर्ट ओपन था, एक HDMI पोर्ट ओपन था. तो वो थोड़ी कारीगरी की थी मैंने. You can do stuff like that as well if you want to fit it in and you have a slightly larger card. As I said, like it's not a simple build. It's like you have to
spend some time iterating and spend some time modifying. But once it's done, then pretty sure you'll be pretty satisfied and happy with it. Why you will be the first one I meet, or will I? अगर मैंने जिसे सुपारी दी है वो तुझे पहले मिल गया. No. I'm putting in the screw. क्रिस क्रॉस पैटर्न में कर रहा हूँ कि ये अलाइन नहीं होता है. स्क्रू बराबर से नहीं फिट होने वाले क्योंकि यहाँ पर PSU है. तो एक नया आइटरेशन आया है as slightly larger frames, slightly larger, like एक दो mm होता है, but that makes it so much more easier to work with because the spaces, as you guys saw, is like so tight. On 1 millimeter here and there it makes a big difference. Let me know if you guys like to watch this live or I just like upload a video for it. And मेरा initial plan video बनाने का. I thought if I'm doing it, people might as well watch. If they don't watch, I can upload it later. Let me know what your thought. जो भी है chat में अभी. Whether you enjoyed this format or you would like a video which is edited and slightly shorter, because this is a bit long, right? Because you're doing it, redoing it, iterations हो रहा है. I could have like edited out some of these parts if I was making a video. I need to get shorter. Fitting in, but it's happy. And two more screws to go. I just have
That's it. I don't have one screw. So this is it. This is what the case looks like when it is done. This is the finished case. And this is a OnePlus 6. So you can see how small. Like 1, 2, 3, 4 OnePluses. OnePlus 6 side by side. Like back. This is how it will look like when it is installed. The GPU part will be. This is what. No RGB, nothing fancy. The only RGB is that this light up to be red color. Power button. And there is some motherboard lights there. But that's about it. And this is the case done. It's actually I have a laptop right here. Actually smaller than a laptop. This is a 15.6-inch laptop. And here is the laptop. Okay. Just put it on top of the laptop. And it's smaller than the laptop. See? There's still some space over here. There's still space here. Slightly. Smaller than a laptop. It can fit inside a laptop bag pretty easily. And you can carry it with you. And मेरा plan यही था कि when I travel, instead of carrying a laptop, I can carry this. So if the office makes me travel for some work, I can game, hopefully. And it weighs a bit more than a laptop though. ये पूरा, I think it weighs around 8 to 10 kilo. So yeah, it's heavier than a laptop, but it's smaller than a laptop. So yeah, that's that. और कोई अगर questions है, or if you want to know something about it, let me know. I will put a link for the case within a minute, and I'll show you some video photographs as well of what this case looks like. There is a waiting period, by the way, for this case if you want to buy it. I think he had, no, it's not being sold anymore. But I'll put up a link and you might be able to find it. This is the link for the case. I'll put this up and you can find it. This find it here. If you register, there is a for sale section. You can find someone who's selling it. Kind of pricey, like $200 के आसपास public बेचता है ये. $150 to $200. I put up a photo or a link of painted. Put up this.
Check this out. Someone painted this electric blue. This looks amazing. And this is an iteration जो इसके पहले है. जो इस it had a smaller height. It was smaller than this. उसकी height कम थी. तो यहाँ पे जो पावर ब्रिक मैंने फिट किया वो यहाँ पे पावर ब्रिक नहीं फिट होता था. But just look at these colors, man. It's absolutely fantastic. बहुत ही ज़बरदस्त. And he chose this color based on a BMW that he's. I mean, this was something I was hoping I could paint it like, but in white, metallic white, and then have a black border. Let me know if you think that looks nice. And I think that's about it. अगर कोई questions है या कुछ और आपको पूछना है तो let me know. This is, by the way, a keyboard. See, it's smaller than a keyboard. It's, it's like an 80% keyboard right next to it if you put it in. That's how small it is. Right? Because this is where the number pad is. An 80% keyboard would be only with the arrow keys. And it's just amazing. I'm just, and if you look at it this way, then it's smaller than a 60%. So it takes lesser space than a keyboard. Alright. Let me know whether you like this format or you would have liked if I had put up a video instead of putting up a stream. और कौन-कौन का है chat में? Just let me know before I close the stream. Drop a hi or something. Type करो chat में. कौन है? Hi बोलो. Speak now or else remain silent for the rest of put in nicely. Done. That. Oh yes, I forgot completely. This does not fit in. Alright, this was not fitting in. इसके जो pins है, ये जो pins है यहाँ पे, मैंने उन pins को bend किया है. So they were protruding out, and I just bent them so that it fits in flush. And it doesn't touch anything because these are shrink wrapped. Touch anything. Something very risky that I have done. What I would like to. Okay. Stream is better because people get to know more about it. Okay. But see, if I put up a video, you guys can also ask questions in the comment and I can reply back to that. So that would be more like a passive discussion or a reactive discussion rather than an active one, because you will be posting questions after the stream is done. But yeah, I can do that, or I can continue these live videos. Anything else that you guys would like to see in terms of building a PC or something else, anything related to computers? Because what I had in mind other than this was I have an iPad display which I am planning to use as a secondary monitor. So I got a display driver for that and I'm going to make that into a monitor. So if that's something that you like to do, because these are basically just hacks of sorts, like make do things. 1 second, mic is working. Yeah. So these are like just make do things that I am planning to do with the hardware that I have, along with like building a computer or fixing it or doing some changes in it.
So would you like to know like more technical stuff, or would you specs for this PC? Those specs are for the one which I'm streaming from right now, but the specs for this is I have an MSI B450 as the motherboard, a Ryzen 2600 for the processor, a Noctua NH9A for the cooling. This is a Noctua 120mm fan. The GPU is an RTX 2060 by EVGA. The power supply is HDPlex 450. So that's a 450 watt power supply. And और क्या है specs में 16 GB RAM है, which is I think can't see it now. I think Corsair का RAM है, if I'm not. And Kingston का 500 GB NVMe drive है. By the way, this is an old motherboard. There are new motherboards जिसमें दो NVMe drives है. I have an iMac 2018. Should I upgrade to Windows? Nusrat, it depends on what you're doing. Are you using it for some design work? And if you're using it for design work, which is Adobe, then just stick with my iMac. Adobe or Illustrator or Photoshop. Because an iMac is pretty expensive, right? So I don't know if it makes sense to sell that off and get something. And for designers, I think they tend to prefer an iMac because it's a lot more stable than a Windows installation, at least for designing. Because this is not a Windows PC is not that stable for designing work, right? And you can design on it. My brother designs on a Windows PC, but if you're set with an iMac, and if you how long have you been using it? It depends on that as well. Because I built a Windows PC for my dad, and he wasn't happy with it. He thinks an iMac is an iMac. He's more used to the OS of Apple than Windows, so he likes that. But yeah, there are ways to take off-the-shelf specs, off-the-shelf parts like a GPU and a motherboard and all of that. It's called a Hackintosh. You can take that and build a system and run the Apple OS on it. But it's not something which if you haven't dabbled around in system installations, I would not suggest you do that unless you see something spec by spec and you just replicate it as is, which some people do. You can do that, but it depends on whether you're comfortable using a Windows PC and what issues are you facing with your iMac. Are there any issues? You think it's okay, or you find it slow, or you just want to upgrade because you want to upgrade? And what's the scene with that? You need to look at all of those things. That's why I mean, if someone is asking me if they have to go from a Mac to a PC, I would say it depends. I mean, I know it's not a clear-cut answer, but it depends. कैमरा फ्रीज हो गया है, हाँ आई थिंक सो कैमरा फ्रीज हो गया फॉर सम रीजन. आई थिंक मेरा फोन लॉक हो गया है. या तो फोन लॉक हो गया या तो फोन हीट हो गया, या मेरा फोन की बैटरी चली गई है. Even though it was on charging, the phone's battery is gone. Let me check if I can. Yeah, it's on 2% battery. Phone मर गया. Sorry for that. I'll put up something else. Webcam तो बंद हो गया. I can put an overlay. I can put this overlay. Webcam freeze हो गया. Sorry guys. मेरा phone मर गया. I think it could not take that much load. उसका वैसे ही जब मैंने start किया था तब 60% battery पे था. I think the phone is dead. So that's why. Droid cam, yes, I'm using नहीं Droid cam नहीं, मैं IP webcam करके कुछ है वैसा यूज कर रहा हूँ.
कुछ बैकग्राउंड में स्टार्ट करता हूँ बिना साउंड के एटलीस्ट, सो दैट विल मेक। असद की स्ट्रीम देखते हैं चलो, एंड वी कैन चैट, वी कैन पुट हिम ऑन म्यूट एंड वी कैन चैट while we are talking. Let's do एक सेकंड प्ले को ऑफ कर लेते हैं और एंड वी पॉप आउट और चैट। आई यूज ड्रॉइड कैम फॉर स्ट्रीम, हाँ काफ़ी अच्छा है यार, आई वाज लाइक प्रीटी हैप्पी विद इट। बट ड्रॉइड कैम में आई वाज नॉट गेटिंग सेटिंग्स फॉर द बिट रेट एंड ऑल, तो मैंने फिर ये वेब कैम चेक किया, दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग। बट आई वांट टू यूज समथिंग वेयर आई कैन actually use the USB connection instead of using just a Wi-Fi connection. क्योंकि that way at least the lag will also be lesser. इसमें lag बहुत ज़्यादा है and like it heats up a lot, right? Because कैमरा भी चल रहा है, वाईफाई भी चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है and that's not really the best thing to be having. So that's why मैं सोच रहा था एंड में अगर मेरा कैम चालू होता तो जितने भी लोग हैं उन लोग को फेस कैम दिखाने, बट सैड कैमरा मर गया, क्या करें। नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा ये और क्या तुम लोग को देखना है, आई मीन if you guys enjoy stuff like this, because my plan is to do this on a separate channel instead of this, because I want to keep this for gaming and I'll just do another channel जहाँ पर मैं ये ऐसे सब टेक्निकल चीज़ें करूँ तो वो लोग आके देख सकते हैं। एंड क्या चीज़ें देखनी है, लाइक यू वांट टू लुक एट हार्डवेयर रिव्यूज़ या फिर इस तरह का जो मैंने काम किया वो देखना है या बिल्ड्स देखना है, और यू वांट टू चेक समथिंग एल्स। हाँ काम पूरा हो गया गुलाटी, लेकिन मेरा कैमरा का बैटरी ख़त्म हो गया तो इट स्विच्ड ऑफ मिड स्ट्रीम, तो इसीलिए मैंने असद भाई की स्ट्रीम चालू की है साइड में, एंड दैट्स नॉट समहाउ इट्स नॉट शोइंग अप फॉर सम रीजन। लेट मी रीस्टार्ट द स्ट्रीम वन सेकेंड, इसीलिए मैंने फिर वो ड्रॉप कर दिया एंड आई वेंट विद दिस थिंग राइट नाउ। एक सेकेंड, रिफ्रेश करने ट्राई करो स्क्रीन को, आई थिंक इट शुड वर्क नाउ, आई थिंक इट शुड वर्क नाउ, ट्राई रिफ्रेशिंग द स्ट्रीम, कैन सी इट, ओके। तो बाजू में मैंने असद भाई की स्ट्रीम चालू किया बिकॉज माई कैमरा इज जस्ट फ्रोजन, सो क्या करें, एटलीस्ट समथिंग एल्स दैट्स देयर ऑन द साइड टू लुक एट। मेरा कैमरा फ्रीज हो गया तो आई थिंक ओबीएस जस्ट गॉट नॉक्ड आउट। मत दिखाओ डीवीडी। क्या दिखाऊं, कोई और कुछ और है नहीं, तो मैं यही देख रहा हूँ फिलहाल, किसी और का तो स्ट्रीम चले ना, मेरा नहीं चल रहा है तो टाई गेमर गिल का चल रहा है तो। अच्छा खेला नहीं है, अच्छा खेलनी है तो फिर ये गेमर गिल का चालू करता है वीडियो, गेमर गिल का देखो। हाँ इसका बताओ मुझे स्ट्रीम पे क्या क्या देखना है तुमको, कि मैं वही सोच रहा था कि मैं एक अलग से स्ट्रीम चैट करूँ, अलग से चैनल स्टार्ट करूँ जहाँ पे इस तरह की चीज़ें मैं डाल दूँ। तो मुझे बताओ क्या क्या देखना है आप लोगों को, एंड व्हाट यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन, एंड इफ यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग फर्स्टली, बिकॉज वो मुझे नहीं पता वेदर यू गाइस फाउंड दिस इंटरेस्टिंग और नॉट। कुछ भी चलेगा, आपके कोई फेवरेट स्ट्रीमर की क्लिप्स दिखाऊं।
मेरे फेवरेट, मैं वैसे नॉर्मली सबकी स्ट्रीम्स देखता हूँ बट आई वॉच क्लाउन स्ट्रीम, एक्सएलआर की स्ट्रीम देखता हूँ और ये दोनों मैं नॉर्मली देख लेता हूँ। इवन इफ आई एम नॉट चैटिंग आई जस्ट सी एंड आई लाइक तो मैं सबकी कर लेता हूँ, बट दीज आर द टू स्ट्रीम्स दैट आई नॉर्मली वॉच। ऐसे स्ट्रीम उतना ज़्यादा मैं अदरवाइज नहीं देखता। मैं जिन्स की स्ट्रीम पे आ जाता हूँ जिन्स को देखने, बट आई मीन आई वॉच स्ट्रीम्स मेनली फॉर द चैट, नॉट फॉर हाउ द गेम प्लेज टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को गेम प्ले से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई कोई लोग गेम प्ले के लिए जाते हैं, मैं गेम प्ले के लिए नहीं जाता, मैं सिर्फ स्ट्रीम देखने के लिए, सुनने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए जाता हूँ। आई डोंट रियली गो फॉर द गेम प्ले। Okay, you found it interesting. Would you like more videos like this, or would you like more videos where I actually tell you what the hardware is or how to build a PC from start? Because that's another thing that I had in mind, like build a PC from start to end on the stream, and that would also be like around maybe 1-2 घंटे का stream हो जाएगा वो भी roughly, क्योंकि उसका मैंने एक वीडियो बना के रखा है। जो मैंने पहला स्ट्रीमिंग का मेरा पीसी है उसके बिल्ड का मैंने एक वीडियो बनाया है। I was thinking I'll upload that, but if you want to see a stream, I can do that as well. I can like take it apart and then put it back. Would help me. Is it something you would like to do yourself as well though? So we can do that also. Like you guys can get the parts and we can go step by step. Because like today's stream was just like reinstalling or replacing a GPU. So that's like very straightforward. And it was an ITX board, right? तो ITX board में सिर्फ एक ही slot होता है जहाँ पे GPU जाता है. बट अगर तुम्हारा नॉर्मल ATX या M-ATX बोर्ड है, okay, you would be able to do that mid much. Fine. I mean, if you have like a mid ATX board or a normal ATX board, उसमें 2 से 4 PCI slots होते हैं, and not all of them are always equal PCI slots. क्योंकि the closest one has a 16x speed, and the others would be having either 4x or 8x. So the bandwidth is less. तो वो थोड़े slow चल सकते हैं. I mean, nothing that you would be able to make out, but it does run slow. So stuff like that, but these are small things, right? ये मुझे भी नहीं पता था, मैं फिर जब करने लगा ये सब तब मैंने देखा दूसरे स्ट्रीमर्स को और फिर मुझे पता चला कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। तो वैसे कुछ ये जो भी बोला कुछ समझ में नहीं आया। हाँ तो ये अगर समझना है तो फिर एंड इफ यूड लाइक टू अंडरस्टैंड देन आई कैन डू दैट। आई कैन एक्सप्लेन एंड टेक एवरीथिंग वन बाय वन, लाइक फ्रॉम द बेसिक्स कि मदरबोर्ड क्या होता है, कैसे बनता है पीसी, कैसे असेंबल करना है, क्या क्या करना है उसमें, व्हाट ऑल पार्ट्स गो इनसाइड इट, वो सब कर सकते हैं। If you guys are going to enjoy it, I'll do that. And I'll do it on a different channel, not on this. ये आज का भी जो वीडियो है, I'll keep this on for a while and in public, और फिर मैं उसको eventually I'm going to make it private because I want this channel to be only for the gaming stuff that I'm doing. अच्छा जिन्स में इसका स्ट्रीम लिंक डाला है मैंने, जो मैंने केस लिया था उस बंदे का वेबसाइट डाला है, वो मिला है तो देख। बट इफ यू वांट टू बाय द केस यू विल हैव टू बाय इट फ्रॉम समवन एल्स, बिकॉज वो बंदे ने केस बनाने का और बेचने का बंद कर दिया। बट देर आर अदर सिमिलर केसेस दैट यू कैन बाय। अगर इंटरेस्ट है तो मैं भेजता हूँ उसके लिंक्स। और मैं वही बोल रहा था, लाइक ये जो मेरा अभी स्पेक है, इस स्पेक में आई कैन इजीली रन फोर्टनाइट एट 1080p at like 160 or 180 FPS आराम से, with no issues at 1080p.
इवन आई थिंक एट 2K या 1440p पर मैं अगर रन करूँ तो आई एम श्योर आई माइट गेट अराउंड 150 FPS, 130 150, लाइक थोड़े सेटिंग्स इधर उधर करके। 85 का बजट फिक्स किया है पीसी के लिए। 85 में या यू कैन गेट अ मिड रेंज गेमिंग पीसी एंड दैट इज डूएबल। थोड़ा यहाँ वहाँ तुझे बार्गेन ढूंढना पड़ेगा बट इट इज डूएबल। रैम बाय द वे अगर लेके रखना है तो अभी ले लो, क्योंकि रैम प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू गो अप अगेन। एंड अभी रैम बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता पड़ा है रैम। आई मीन मैंने रैम जब लिया था 8 GB का रैम मुझे पड़ा था 30 KD का, विच इज लाइक अराउंड KD वुड बी 6000, अराउंड 6000 KD, 6000 रुपीज होगा। और अब रैम का प्राइस हाफ हो गया है, अब 3000 रुपये में तुमको रैम मिलेगा 8 GB का। तो लाइक रैम इज डॉट चीप, just get RAM and get a NVMe drive, because these are couple of things that are pretty cheap and you can get them. So buy those things. And like you don't need to buy all of the parts at the same time. Buy them slowly. Like अभी ये भी जो PC मैंने assemble किया है, I have bought all of these parts over like 1 year, 1.5 year. 1 डेढ़ साल से चल रहा है इसका सब असेंबली। अभी रैम लेके रख ले, रैम लेके रख ले, और NVMe अगर लेना है तो वो लेके रख ले बस। क्योंकि रैम के प्राइसेस वो सब बोल रहे कि बढ़ेंगे थोड़ी दिनों बाद, रैम के और SSD के। तो सिर्फ ये दो चीज़ें लेके रख, एंड देन जस्ट कीप इट। रैम 8x2, या 8x2, दैट्स मोर देन इनफ। लाइक 3200 हर्ट्स का जो रैम आता है, क्योंकि दैट यू कैन फिट इन इधर इंटेल बिल्ड या फिर AMD के बिल्ड, दोनों में भी चलेगा। एंड लाइक डॉट चीप है। बट आई थिंक रिपब्लिक डे के टाइम पे कोई ना कोई सेल निकलेगा, तब देख ले क्या क्या प्राइस है। अब ये मैंने GPU मेरा लिया था मैंने जब ब्लैक फ्राइडे था तब। सेकेंड चीज़ मैंने बोला था NVMe ड्राइव्स, जो हार्ड डिस्क है या SSD है वैसे, पतली सी रहती है, रैम की तरह दिखती है। ये CPU मुझे मिला ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे, एंड आई गॉट दिस CPU फॉर अराउंड, हाँ लिख लेता हूँ, आई गॉट इट फॉर अराउंड 8,000 रुपीज़। NVMe ड्राइव के लिए किंगस्टन, ये डेटा, इनमें से कोई भी देख ले, दीज आर लाइक प्रीटी डिसेंट। रैम के लिए यू वुड लुक एट Corsair के वेंजेंस आते हैं, दिस इज लाइक द चीपेस्ट वन आई नो एंड प्रीटी रिलायबल। दिस इज लाइक द चीपेस्ट रैम दैट यू कैन, Corsair वेंज। इससे सस्ता मुझे नहीं लगता तुझे और कोई रैम मिलेगा। एक सेकंड देखना क्या हुआ दैट इसको। इसके डिस्कॉर्ड में ये देखिए, ये जो तूने देखा है ना i5,
ये i5 9600K, ओके दिस इज फाइन। क्या देख, गीगाबाइट्स RTX 26, this is slightly expensive, you can get cheaper than this। RTX 2060 अभी तुम देख रहे हो तो look at 25,000। वेट फॉर अ वाइल, इसके प्राइसेस गिरने वाले हैं क्योंकि एनवीडिया ने अक्रॉस प्राइसेस गिराए हैं उनके 2060 और 2070 सीरीज के, तो ये 25,000 26,000 में मिलेगा, तो तेरा 1-1,500 वहाँ पे बच सकता है। कॉर्सर वेंजर्स, यस दिस इज द रैम आई वाज टेलिंग यू। DDR4 3000, 3200 का भी देख ले कितने का आता है, इट शुड बी रफली अराउंड द सेम प्राइस। 3000 इज अ गुड प्राइस फॉर दैट। See, water cooling, you don't necessarily need it if you're not going to overclock. If you're going to just run games, you can stick with air cooling. And AMD के साथ जो air cooling आता है वो बहुत अच्छा है. But for an Intel, yes, get another cooler. And ये देखो, ये single fan का है. So if you're looking for a radiator or a cooler, you would look at something which has two fans. Let me check what I on Amazon. NZXT का Kraken आता है, बहुत ज़बरदस्त है. See, look at something like this, which has two fans. It's a bit pricier than this, but if you're going for this, इसके जगह पे you go for all these. So, I get one of these. This is more than enough. This one. या फिर इतना नहीं खर्चा करना है तो you can go for Dark Rock India होता है क्या? Dark Rock 4 actually. Dark Rock Pro महंगा है. Dark Rock 4. ये Amazon पे महंगा है. Check these prices out on MD Computers or on Prime ABGB. ओके मैं देखता हूँ, मैं 85,000 का बजट है ना, मैं देखता हूँ व्हाट ऑल कैन कम अप इन दिस। मेरे पास ये है, डार्क रॉक स्लिम है मेरे स्ट्रीमिंग पीसी में, एंड दिस इज रियली गुड। ये मुझे 12 KD का मिला था, तो कितना है 12 KD INR? ये देखो, ये 3,000 भी नहीं है, 2,500 में मिला था मुझे ये वाला डार्क रॉक स्लिम। अमेजिंग कूलर है। इट हैज़ आई थिंक 105 या 120 वाट्स का कूलिंग कैपेसिटी है इसका। रियली गुड, एकदम साइलेंट है और कूलिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिसेंट। सिंगल फैन है एंड बहुत स्लिम है, बट फिर भी इट हैज़ अ डिसेंट परफॉर्मेंस, एंड यू विल गेट कूलर्स विच आर मच बेटर देन दिस एट इन द सेम प्राइस रेंज। मेरे केस में सिर्फ ये फिट होता था तो मैंने ये लिया है। एक दूसरा भी आता है, रुको, हाइपर 212। दिस कूलर ऑल्सो हैज़ रियली गुड परफॉर्मेंस, कूलर मास्टर का है। सेम फॉर्म फैक्टर है, बट दिस ऑल्सो हैज़ अ गुड कूलिंग। I'll check and I'll give you something. 85 में case ways, okay, I'll check everything. I'll try to see what I can spec up for you. ठीक है, चलो फिर मैं स्ट्रीम बंद करता हूँ। और कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो जस्ट पिंग मी ऑन DM ऑन डिस्कॉर्ड, पिंग कर दो या कुछ ऐसे कर लो, मैसेज कर देना, and I'll try to get back, and I'll try to see what else I can stream with regards to the techie stuff, and I'll keep this stream public for a while. I think by next week मैं इसको private कर लूँगा। तो अगर कुछ देखना है और you want to re-see something, then you can do that, or if you want your friends to take a look at it, और अगर कुछ feedback वगैरह है तो मुझे बताओ।
like what parts can I improve on and what parts would you like to see more. I know the camera angle was like a bit uh, क्विक जॉब था कैमरा वर्क का क्योंकि मैं सिर्फ एक चेयर के ऊपर ट्राइपॉड लगा के उसमें मोबाइल डाल दिया. बट आई एम गेटिंग अ स्टैंड विच आई विल बी एबल टू फिट टॉप डाउन व्यू रहेगा मेरे डेस्क का. तो ये तो मैं ज़मीन पे बैठ के किया, तो नेक्स्ट टाइम आई होप डेस्क पे बैठ के मैं टॉप डाउन व्यू दिखा सकता हूँ. कैमरा एंगल ठीक था कि नहीं वो बताना, यानी कुछ मिस हुआ या बराबर से सब नज़र आया और यू वुड लाइक मोर क्लोजअप्स और अ डिफरेंट एंगल. नेक्स्ट टाइम फेस रिवील चाहिए दिखता. नेक्स्ट टाइम 10 मिलियन सब्स हो गए तो फिर डेफिनेटली फेस रिवील आ जाएगा फॉर श्योर. बस 10 मिलियन ज़्यादा दूर नहीं है. कितने सब्स हैं? आई डिडंट चेक. 160 है बस. थोड़े से ही चाहिए, थोड़े से ही सब्स चाहिए, ज़्यादा नहीं. 10 मिलियन तो आराम से आ जाएगा वेरी सुन. बट नहीं, see if I put this on a different channel, so yes, I might do a face reveal there and I will put up different stuff, tech related only. But yeah, let me know. Let's see how it goes. All the best to me, and thank you for sitting till so long and watching the stream. And hope it was informed, something that you enjoyed, and something was something that you found informational as well. और हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, या आधा हिंदी आधा इंग्लिश, वो भी बता देना. बिकॉज आई एम नॉट श्योर. मेरा टारगेट तो यही है कि मैं इसी तरह से करूं ताकि एटलीस्ट अपने जो देसी लोग हैं वो लोग देख सकें. बिकॉज बहुत सारे टेक चैनल्स हैं जो अभी हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही है सब के सब. और जो हिंदी में है वो इस तरह का एटलीस्ट आई हैवंट सीन एनीथिंग राइट नाउ. लाइक जो स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा है और बता रहा है स्टार्ट टू एंड क्या करना है. तो लेट मी नो. एंड इफ यू वुड लाइक टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स then do that as well. And yeah, let's see how it goes. All right, thank you so much, and hope you enjoyed, and I'll see you next time. Chalo, bye bye.